to lakes and hiking trails, ancient monasteries and temples, even the Dalai Lama, the city of Dharamshala offers tourists particularly beautiful scenes. The picturesque state of Himachal Pradesh witnesses over 16 million tourists every year. Its second capital city of Dharamshala, one of its most popular destinations. However, the view from Sudher, a small village adjacent to this bustling city, tells a very different story. For the approximately 3,600 residents of Sudher who live downhill from Dharamshala, the hills that surround them are of a different kind. Made up of leftover food, plastic bottles and tetra packets, animal carcasses, used sanitary napkins and band-aids, diapers, medicines and every possible kind of unsegregated waste, all generated in Dharamshala and dumped in this tiny village. The frequency of unscientific waste disposal in Sudher has reportedly only increased over the past 20 years. Anuradha, a local housewife, is fed up with the lack of hygiene and sanitation in her village. जो हमारा पीने वाला पानी है उसका रंग ही पीला हो जाता है, हम पानी नहीं पी सकते। वो खेत में काम करना तो इल्ले वगैरह जो है वो कागज़ कोई क्या पूरा गंद हमारे खेत में छोड़ देती है ना, हम उसकी सब्ज़ी खा सकते हैं। हमने गाय भैंस पाल रखी है तो उसको हम घास कैसे खिलाएं, बहुत गंदा घास होता है, उनका हमने दूध पीना है। जो मेरे गांव वाले हैं वो सभी बीमार रहते हैं इस दिक्कत से, बहुत बुरा हाल है। The 53,000 residents of Dharamshala generate around 25 tons of trash daily, all of which is dumped onto this ground. The convenience of discarding that much waste in a small village, unequipped to deal with it, comes at the cost of the locals' physical health and mental well-being. अभी आप मतलब अगर साथ चलेंगे देखेंगे तो हर घर में आपको बीमार ही मिलेंगे। हाय 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 करते ही मतलब ये काम करते रहते हैं मेरे गांव के, तो मुझे दुख होता है इस बात का बहुत सा। Some residents have reported injuries from pieces of shattered glass, some from kidney and other serious ailments as a result of exposure to garbage and harmful materials mixed up in it. मुझे जो हमारे घर के पास ये कूड़ा फेंकते हैं मतलब उसको साफ़ करने से ये हाथों में एलर्जी है, मेरे पाँव ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी ये स्किन मेरी बिल्कुल ख़राब है। ये स्किन मैंने डीसी के पास भी बताई, रो के बताई और मेरा बुरा हाल था। उस दिन तो बुरा हाल था, पाँव में बुरा हाल था, पर कहाँ जाए हम, करे तो करे क्या, ये हमारे नहीं है, बस की बात नहीं है ना। Anuradha's husband, 45-year-old Anil, works as a farmer as well as in an electric shop. During the monsoon season, the garbage streams downwards and floods his fields. His cattle too suffer from diarrhea and other illnesses as a result of grazing on litter. Frustrated with the failure of the authorities to manage waste, Anil has considered leaving Sudher altogether. कारण देखो, हम ये तो है नहीं कि बड़े बिजनेसमैन या बड़े कोई ये हैं व्यापारी हैं। देखो हम नॉर्मल 8-10 या 12 हज़ार की नौकरी करते हैं तो उसमें हमने परिवार भी चलाना होता है। तो ऐसे में तो वो कोई आदमी घर डालना तो कम से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए उसमें के लिए, तो इसलिए शिफ्ट नहीं हो पा रहे यहाँ से। एक और समस्या खड़ी होगी इसके ऊपर, इस गंदगी की वजह से जो ये पशु जानवर वगैरह जो मरे हुए ट्रकों में गाड़ियों में भरकर फेंक रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ जो ये गिद्धें खाती हैं उनको, फिर वहाँ पानी नहीं मिलता है इनको। पानी वो पीने यहाँ आती है, हार में है, तो जब ये घास लेने निकलते हैं, ये अपने पशु छोड़े होते हैं, डंगरे छोड़े होते हैं, तो ये गिद्धे ना वहाँ देख के तो ये अटैक करती है ऊपर, सिर के ऊपर अटैक। Once the waste is coming in, once it is dumped out here, we further segregate it because you can see it's all mixed out here. There is soft plastic, there's hard plastic, there's paper, aluminium. 33-year-old Itosha, part of Waste Warriors, an NGO based in Dharamshala dedicated to the welfare and upliftment of rag pickers, explains that Sudher's geographical location, downhill from the dumping ground, makes it especially vulnerable to the harmful effects of poor waste management.
Since the waste is dumped at a side of the hill, the problem happens, Dharamshala gets excessive rains, like 6 months of excessive rains, and during that time what happens is the entire waste just flows down the hill, and the leachate that gets formed because of the mixed waste that is there, so that mixes with the groundwater, which creates a lot of problem for the villagers who live downhill. Dharamshala is one of 100 cities classified as a smart city under the Smart Cities Mission, a development program initiated by the central government in 2015. Guidelines of this program state that Dharamshala must be equipped with a solid waste management plan, nurture a sustainable environment, and ensure the health and safety of its residents. जो चीज़ें हैं तो देखो स्मार्ट सिटी से दूर होनी चाहिए, ये तो स्मार्ट सिटी के अंदर ही है बिल्कुल ही, तो स्मार्ट सिटी कैसे कह सकते हैं इनको हम? People tend to just throw away the waste from their households and just dump it anywhere. And since it's a mountainous area, the problem happens that you throw somewhere, it's just out of sight. But it actually doesn't go out of sight. It goes and mixes with the groundwater. It goes and mixes with the rivers, rivulets that are there. And that kind of creates a lot of pollution in the water. One of the major sources of pollution out here is the air pollution, because people do not know what to do with their waste and they burn it. Established in 2012, the Bhageshwari Mahila mandal, a local advocacy group of around 200 women, resolved to tackle Sudher's waste management problem. It began with Sunita, president of the group, writing a letter to the National Green Tribunal alleging that the dumping violated the 2016 solid waste management rules. In 2019, the NGT, acting on Sunita's letter, instructed the Dharamshala Municipal Corporation and Himachal Pradesh State Pollution Control Board to look into the matter. शिमला हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री जी को, ये अपना प्रदूषण बोर्ड, नगर निगम वालों को, डीसी ऑफिस, हर जगह हमने जो बार बार हमने ये भेजे, लेकिन उनका यही जवाब आया कि हम इसको जो जल्द से जल्द जो है इसका समाधान हम कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत से साल हो गए, बहुत से साल। Frustrated by government inaction, this group of women have since taken matters into their own hands. One of their main interventions has been conducting trash cleanup drives every 15 days. हम जब भी अपने महिला मंडल से मतलब काम करते हैं, हम लेते हैं, तो वो ग्लव्स वगैरह तो होते नहीं हैं, और हम ऐसे हाथ से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। कई बार जो पानी की बोड़ियाँ बावड़ियाँ होती हैं जो, उनको भी हम साफ़ करते हैं, और बाकी जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है वो भी हम इकट्ठा करते हैं, उसको काम करते ही रहते हैं। मतलब ये नहीं कि रुक जाते हैं, हम काम करते ही रहते हैं। एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक कोई 20-25 टन कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पर। वो हम लेडीज़ तो साफ़ कर नहीं सकते, या हम गांव वाले तो साफ़ कर नहीं सकते, वो तो इनका ही काम है, जो मतलब सरकार का ही काम है ना। जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। गोलडंगी के पास हैंडपंप हमने महिला मंडल वालों ने लगवाया है यहाँ पे। ये पानी मतलब इकट्ठा ही हुआ था, एक भवन का हमने उद्घाटन करवाया था, एक हैंडपंप लगवाया था यहाँ पे। यही पानी जो है मेरे गांव के जो लोग हैं नीचे हार के वो यूज कर रहे हैं इस पानी को। जो एक शहर का कूड़ा है, या एक मतलब ये स्मार्ट सिटी है ना, उसका कूड़ा है, वो हमारे घर से बहुत अलग है। लेकिन हमारे गांव वाले जो है, उन्होंने भेड़ बकरियां या पशु पाल रखे हैं, वेस्टेज अनाज उनको खिला देते हैं। Apart from the drudgery of literally cleaning up after others, the Mahila Mandal's most commendable resolve has possibly been the spirit to keep the fight on. In January 2020, the advocacy group organized a demonstration at Dharamshala's Gandhi Park and later marched to the district collector's office. The same month, the Mandal also conducted a road blockade protest, commonly called a Chakka Jam, that was attended by around 500 people. The women also organized a small protest in March last year amid the COVID-19 lockdown.
They're now planning a dharna or a sit-in protest at the gate of the dumping site. हाँ जी, बहुत सी प्रॉब्लमें आते हैं जी। क्या नहीं, औरतों को क्या नहीं सोचना पड़ता, सब कुछ सोचना पड़ता है। मेरे गांव वाले हैं, महिला मंडल वाले हैं, इनकी मतलब इनके घर में भी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं इनके, और इनकी खेती बाड़ी है। एक स्पोर्ट भी होती है पीछे, स्पोर्ट महिला मंडल की स्पोर्ट है, गांव वालों की स्पोर्ट है, पति देव के हस्बैंड की इनकी सपोर्ट है। इसको जो हम शिफ्ट करके ही छोड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा गांव जो है सुधेड़ गांव जो साफ़ सुथरा और अपना जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत कर सकें। Apart from doing their bit to fight illegal dumping, over the last 9 years, the Mahila Mandal has made tangible improvements to the standard of living in Sudher. From plantation drives to helping underprivileged women access welfare assistance from the government. यही दीदी के घर ना, जो हमारे प्रधान है उनके घर सिलाई सेंटर भी खोला था, जो मतलब ये उनको 1,000 रुपये दिया जाता था सिखा के, तो वो भी किया है। फिर हम अपने जो महिला मंडल है वहाँ बच्चियाँ होती हैं छोटी, वो उनको देते हैं, पैसा देते हैं। जो लड़कियों की शादी होती है उसके लिए सरकार से पैसा दिलवाते हैं। जो गरीब है उनकी सेवा करते हैं, मतलब जो हमसे हो पाता है वो हम करते हैं। Waste Warriors, the NGO working across 60 government offices in Dharamshala currently, is also doing its bit for trash management. What had started with a clean-up drive for the NGO has culminated today into city-wide educational workshops and experiential sessions in order to tackle the problem of ignorance and apathy at its source. The IC part is one of the major, most important area that we work on. So when we go door to door to collect the segregated waste, we try to grade that what is the quality of the waste coming in, because we need the data that how exactly the progress is happening overall. So I can very proudly say that in a span of hardly few months that we reached a segregation efficiency of 51% in the wards that we are working in. Both Waste Warriors and the Bhageshwari Mahila Mandal have empowered locals in their respective communities to take charge of their future and advocate for their rights, showing us that solving environmental problems like Dharamshala's waste generation requires a collective effort. जो ये कूड़ा कचरा है इससे हमें दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, पर इससे हम ये भी हो गया हमें कि हम सब एक इकट्ठा एक हमारा जुट बन गया है और हम एकत्रित होकर कोई भी काम हम इकट्ठे होकर कर सकते हैं। मतलब